Ready? So in next 50 minutes, we will see how to write data that we will take input from Python into Excel. So are you ready? So what is the output here? The output of this code is, you can see this file. Okay. Here column name are name, email, branch and MDM. Okay. And the values are first record Balaji, email is balajishetty@gmail.com, branch IT, MDM data science. Here name is Raj. Here by default email ID is wrong, but it is okay. CS, branch, computer, MDM, other. Okay. So let us run the code one more time. Then I will show you how to write the code. Okay. I am running the code. This is a simple Python script which will create an Excel file and write the data. Clear? So I run the file. How do I run the file? By command py. Py. Py is the command name. Py file name. This is the file name. Simple Excel example mdm.py. Okay. And the code for this file is written here. This is the code for this file. Can you see this? Import pandas pd. This is library that we will use. We will install this pandas in our environment. And can you see name 1? Enter first student name, email, branch. Okay. And if the branch is IT, MDM is data science, otherwise MDM is CAD, otherwise MDM is other. Okay. अगर branch IT रहेगा तो MDM data science है. Branch mechanical रहेगा तो MDM CAD रहेगा, otherwise branch is MDM is other. So same program I am doing for second student, name to, email to, branch to. Same code I have repeated only for second student, same logic. And here afterwards I create the data frame. DF. What is DF? DF is the object here. Python pandas PD. PD is the object of name PD is the object for pandas. Here if you see this PD is used here. PD dot data frame, name, email, branch, MDM. And these are the column names in my Excel file. Great. Name, email, branch, MDM. So if I want to add 10 columns in Excel, what should I do? Here I should write the 10 column here. That's it. And the input that have been taken from or this name, email, branch and MDM are assigned here. Name 1, name 2, email 1, email 2, branch 1, branch 2, MDM. Clear? These are the variable names. Means what? Name 1, this is name 1, this is name 2. Is assigned in column. Which column? Name column. In the same way, email 1, email 2 for email column, branch 1, branch 2 for branch column, MDM 1, MDM 2 for MDM column. Clear? Afterwards, data frame to Excel. DF to Excel is the standard function of data frame, which will create a file of name student XLS, student record.xls. But where it will save the file? The file is saved on C user BS Shetty environment DS. This is the path. Can you see the path? Here, see the path. See the cursor upward. C user BS Shetty environment DS 6 August code simple Excel. So in this folder, what happened? This Excel file will be created. Clear? Yes or no? This Excel file will be created in the default folder. Okay? And you will get the message print data has been written to student. Now I show you that folder. Can you see the folder? This is the folder C user BS Shetty environment DS code. And here this is the Python code. Simple Excel example MDM. This is the Python code. Clear? Can you see the path here? Yes, this is the same path. And in the same path, this file is created. Student record. This file is created. Clear? Yes or no? So what I do, I just create one more file of name student records 1, 2.
Control yes. So what will happen? Tell me what will happen when I run the code? What will happen? Magic will happen. Here one more file of name student records underscore 12 file will be created with new record. Are you ready? Let us run the code. This code will be available in the description of the video. Don't worry. So py is the command in Python to run the file. Py space simple Excel example mdm.py. Can you see the same command here? Yes or no? So what is the prompt? Enter first student's name, email, branch. Can you see it? What is the value? Balaji, Balaji Shetty, gmail.com, IT. Now can you see the same record here? Yes or no? Okay. Now, for second students, enter student name, email, branch, RAT, CS, computer. Same record present here, yes or no? If you see the command here, if you see the file, can you see the file? Clear? Now, what I do, I run the code one more time and let us see the magic. Student name. Let us take the student name as Raj Kumar. Raj Kumar. Email ID raj@kumar.com. Kumar.com. Branch IT. Enter. This is the record for first students. File is created. No, file is not yet created. No, what happened currently when I run the code? Currently, the variables are assigned. Which variables? These variables are assigned. Name 1. Okay. Okay. So currently, name 1, email 1, branch 1 are assigned. Now, this code execute. Now, what is the MDM of this? Can you tell me? What is the MDM? Here, branch was IT. Now, MDM is now data science. The value of branch 1 is now data science. Clear? Now, when I run the code, now what will happen? Tell me. Now, I get this prompt. Enter student, second student name, roll number and branch. Clear? Yes or no? Afterwards, MDM will be allocated. I will enter branch as mechanical. So, MDM will be CAD. And afterwards, what will happen? This data frame will be created. This data frame will be created and I will get a file of name student record 12.xls. Are you ready? Let us go back. Name 2, Sham Kumar. Email sham@sggs.ac.in. Branch mechanical. Press enter. Are you ready to see the magic? Yes or no? Do you want to see the magic? How many of you want to see the magic? Jadoo. Jadoo dekh rahe hai? Let us be ready for this magic. What will happen? Tell me. What will happen? Come on. अभी क्या होगा बताओ? जादू होगा. अभी मैं आपके सामने जादू करके दिखाऊंगा. What will happen, guys? File will be created. Ready? 1, 2, 3. Wow, great. Congratulations. You got successfully the file of name student record 12. Open the file. Can you see the same record here? Yes or no? This is the logic. This is the magic of data science. What I have done? I have simply written the code. But how to execute the code? ये तो कोड होगा. अभी इसको कैसे करना है? Now listen very carefully. What you have to do? Listen very carefully. The command that you have to execute. Okay? मैं आपको कमांड बता रहा हूँ क्या करना है. उसको मैं लाइव करके फिर से दिखाता हूँ. अभी मैं आपको जो बताऊंगा वो लाइव करके दिखाऊंगा. Command prompt. Open command prompt. Type. Click on open. Type cmd. Press enter. You get the command prompt. First step. Okay, your current folder is C user Balaji Shetty. And here my current folder is
C user Balaji Shetty environment DS 6 August code. And here can you see this string? This is the environment. So I have to create the environment. So what I do, if you see, I just copy paste the command blindly because I have just done the same thing in front of you. I will do it again. First step, py-make environment ds6. So I copy this command. Okay, I just rearrange the window. Okay, and I just paste it. But here I make it 6 August, time is 11 p.m. Press enter. What will happen? If you see the logic magic here, in this folder, environment will be created. This is the folder. Now can you see CDS environment 11 August? This folder is just created. Now, अभी के अभी फोल्डर तैयार हुआ है. कैन यू सी 6 अगस्त 11:58 टाइम देखो भाई, दिख रहा है. अभी के अभी तैयार हुआ है 11:58. इसमें क्या है? इसमें है स्क्रिप्ट कमांड. सेकंड स्टेप दिख गया. व्हाट इज द सेकंड स्टेप? जस्ट आई राइट दिस कमांड. सेकंड स्टेप क्या है भाई? ये जो मैंने किया है वो आप करना है. एनवायरमेंट 6 अगस्त स्टेप एक्टिवेट. सो व्हाट आई डू, environment ds /script/activate. भाई ये कहां से आया? देख लो. स्क्रिप्ट एक्टिवेट. क्लियर है? ओके. जैसे मैं रन करूंगा, प्रेस एंटर, सी व्हाट हैपन. यू कुड सी दिस स्ट्रिंग appeared here. Environment is activated. Congratulations, environment is activated. Now for this program, if you see the code here, I need the library of name pandas, pandas, pandas. For that I have to install panda in my environment. Go to pip install pandas. Can you see this pip install pandas? Yes or no? अभी मैंने क्या किया है? ओके, मैंने अभी mkdir कोड किया है. लेट अस फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. ये करेंगे पे mkdir कोड, सॉरी cd environment ds, इसमें जाओ, फिर mkdir कोड, एंटर. अभी क्या हो गया? अभी क्या हुआ भाई? देख लो क्या हुआ. अभी के अभी कोड नाम का फोल्डर तैयार हुआ. अभी के अभी 12 बज गए. देखो क्लियर है? कोड का नाम का फोल्डर क्या हुआ? तैयार हुआ. कोड इज क्रिएटेड. नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट आई हैव टेकन? cd कोड. हियर राइट डाउन cd कोड, प्रेस एंटर. उसके बाद क्या करना है भाई? उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या कर रहा है? Can you see this? pip install pandas. उसके बाद क्या करना है? I have to add one more command, pip install panda and pip install pandas. उसके बाद और एक पैकेज है, ठीक है. I install pip install pandas. प्रेस एंटर. एक पैकेज कर रहा है. उसके बाद और एक पैकेज चाहिए. उस पैकेज का नाम है, जस्ट लेट मी चेक, pip install pandas. और एक पैकेज pip install open excel. pip install open excel. एक लाइब्रेरी करना है. किसके लिए करना है? वी आर यूजिंग which library? Excel. To create Excel file, I have to install one library of name Open Excel. Clear है? Now ये देखो अभी इंस्टॉल हो रहा है. pandas library इंस्टॉल हो रहा है. हो गया इंस्टॉल. Congratulations. नेक्स्ट स्टेप, pip install Open Excel. ओके, प्रेस एंटर. क्या हुआ भाई? हो गया. pip install, क्या गड़बड़ हो गया भाई? Open Excel.
जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक. ओके, ये है कमांड. सो दिस इज आवर प्रॉम्प्ट. यहां पर जाएंगे, कंट्रोल वी, टिप इंस्टॉल ओपन एक्सेल, ओपन पाई एक्सेल, ओपन पाई एक्सेल. ओके, कांग्रेचुलेशंस. उसके बाद क्या करना है? सिंपल है. अभी मैं आपको जो कोड दूंगा उस कोड को एज इट इज कॉपी करना है. फाइल, ओके, सेव एज. कहां पर जाएंगे भाई? कहां पर है अपना फोल्डर? कहां पर है? एनवायरमेंट 11P1, इस पे जाओ, कोड पे जाओ. दैट्स इट, सेव इट. हो गया सेव? हो गया सेव? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? गो टू दिस लाइब्रेरी, पाई स्पेस. ओके, सिंपल. दिख रहा है? प्रेस एंटर. अभी क्या होगा बताओ? अभी क्या होगा? अभी एक्सेल फाइल तैयार होगा. इंटर नेम राज, ईमेल raj@gmail.com, ब्रांच CS kumar@aggs.ac.in, ब्रांच मैकेनिक. अभी इसको लाते सिविल्स. अभी क्या होगा बताओ? अभी ये फोल्डर में क्या होगा? क्या होगा भाई? कोड नाम के फोल्डर में एक एक्सेल फाइल बनेगी. तैयार है? प्रेस एंटर. सी द मैजिक. हो गया मैजिक? कैन यू सी द फाइल? कैन यू सी द टाइम? 12:03 हुआ है. जस्ट ओपन द फाइल. दैट्स इट. तालिया, क्लैप. What if I want to write the program for young students? What should I do? Tell me. क्या करना होगा? सिंपल है. थोड़ा दिमाग लगाओ. क्या करना है भाई? यहां पर बताओ क्या करना है? कुछ नहीं. यहां पर फॉर लूप लिखो. यहां पर just write the for loop. For I equal to in range 0, range 3. Write down this. I use the dictionary, list dictionary, and just pass that list parameter here. That's it. यहां पर जो है ना, एक नेम नाम का डिक्शनरी तैयार करो. सॉरी, नेम नाम का लिस्ट तैयार करो. ईमेल का लिस्ट तैयार करो. ब्रांच का लिस्ट तैयार करो. एम नेम का लिस्ट तैयार करो. लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन. इसमें क्या करना है? जस्ट यूज द फॉर लूप. इन फॉर लूप अपेंड. नॉट यूज अपेंड. क्या करना है? क्या करके दिखाऊं प्रोग्राम? देख रहा है करके? नेक्स्ट लेक्चर में करना है. ठीक है, तो क्लियर है? व्हाट डिड वी लर्न? जस्ट रिवाइज द थिंग. व्हाट डिड वी लर्न? वी हैव लर्न हाउ टू क्रिएट, हाउ टू इंस्टॉल पांडास. पांडा इंस्टॉल किया है. फिर ओपन पाई एक्सेल इंस्टॉल किया है. वी हैव टेकन इनपुट फॉर नेम, ईमेल, ब्रांच. उसके बाद हमने क्या किया है? वी हैव यूज्ड द डेटा फ्रेम and created Excel file. So in this way we have created successfully the code.